It's in the air and the bowler takes it. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल किम छो। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट कनन नायर। लेके आया हूं एक और एपिसोड ऑफ कॉटन बोल स्टोरीज। कॉटन बोल स्टोरीज में आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के मेगा मुकाबले, दैट इज आईपीएल 2024 के तीन मेगा मुकाबले। वन वाज बिटवीन राजस्थान रॉयल्स and Delhi Capitals. One was between KKR and RCB, and the BAP of all the mukablas, that was the 500 plus a game, that is Sunrisers Hyderabad and the Mumbai Indians. So आज मेरे साथ हमारे एपिसोड में है another YouTuber, another podcaster, another young interested lad who is very much giving crisp and very pinpoint opinions about the game. That is Siddharth Dahiya from Cricket Show with Sid. What do you say? How is it going there, man? What's your feel of the initial few weeks of the IPL, buddy? Go ahead. Hey, hi, Karan. It's great to be here at Cotton Bold channel, and also like I have been noticing your work. You are quite witty in what you do. So तो ये यार मतलब मुझे तो काफी मतलब मैं खुद एक पॉडकास्टर हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक नया ये अपॉर्चुनिटी है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट कि मैं कहीं आ रहा हूँ और मैं कहीं कहीं अपने ओपिनियंस प्रेजेंट कर रहा हूँ. As Sid has pointed out, right, Sid has recently recorded an episode on उसका link यहाँ पे description में यहाँ पे कहीं पे होगा. So all the cotton bull story supporters, please go and watch cricket show with Sid. He has some interesting opinions about the game too. So Sid, जैसा we were talking about, right, जैसा आपको पता है हाँ ये week बड़ा interesting सा week था. तो इस interesting week को हाँ let's हाँ go in the ascending order first, to be very honest, because जो लास्ट वाला जो मैच है इट इज द मेगा मुकाबला. आई डू नॉट वांट द ऑडियंस कि उसको अभी से सुन के लास्ट में सब साले स्किप कर जाते हैं वीडियो. तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन. हाँ. फॉर ऑल द लिसनर्स देयर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. आई एम सीइंग कि भाई 500 से ज्यादा लोग वीडियोस देख रहे हैं बट नोन ऑफ यू आर सब्सक्राइबिंग. हाँ, दिस इज वेरी बैड. So yes, please subscribe the channel of Cotton Bowl Stories. So let's talk about the first game that I wanted to highlight. The first game was between Delhi Capitals and Rajasthan Royals. Just for our audience to know, our partner here, Sid, is a very big Delhi Capitals fan, and the reason one of the reasons that we are doing this episode is because Sid wanted to rant about the Delhi Capitals, because this has been a very below par show, to be very honest. By then, मतलब ना बैटिंग में दम है ना बॉलिंग में दम है, और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत पे पूरा फोकस रह चुका है. ही इज मेकिंग कमबैक, एंड उसके कारण आई फील द मोमेंटम ऑफ द गेम हैज शिफ्ट. So what do you feel, Sid? I would like you to brush up on 3 points majorly. One is the much hype comeback of Rishabh Pant. कैसा लग रहा है once he's back? How is he performing? Has his performance impacted the overall team? First. Second thing being the two Australian duo, right? That is David Warner and Mitchell Marsh. They are the only showstoppers of this particular Delhi team. I feel ये 11 की टीम नहीं है. आई फील इट इज ये 9, सिर्फ 2 लोगों की टीम है. 9 लोग सिर्फ गार्डन में, जैसा रोहित शर्मा बोलता है, जो जो गार्डन में घूम रहा है सबकी बजा दूंगा, वैसा कुछ कर रहे हैं ये तो हाँ. and the third thing that has been going on for them with the past 3 or 4 years, I would say, lack of Indian batting and Indian depth. What's your take, Sid, on that? तो सबसे पहले तो कनन मैं इस पे स्टार्ट करना चाहूंगा. बहुत अच्छी बात है कि इस मैच की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, बिकॉज बाद में करते लोगों का इंटरेस्ट सच में खत्म हो जाता. बिकॉज मुझे एज अ दिल्ली फैन बोलते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा है कि बट दिस टीम इज बिकमिंग इररेलेवेंट. Correct. ओनली कंपटीशन टू दिस टीम इज पंजाब किंग्स. तो मतलब वो अलग ही टीम है. मतलब आई आई थिंक नो बडी एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फ्रॉम देम. दैट इज अ गॉन केस, दैट टीम. Of व्हाट course, डू यू I थिंक? know, right? कि कहीं ना कहीं उन लोगों में वो दम नहीं है, and this is the exact reason I threw a few questions on. What do you feel about the captain Rishabh Pant? कैसा लग रहा है about his performance and the impact of his performance on the team? हम्म. तो ऋषभ पंत तो देखिए, मतलब आई विल नॉट बी हार्श ऑन हिम. एंड पंत का जैसे हमने देखा था, वो काफी गुस्सा हो गया था व्हेन ही गॉट आउट. एंड वो उससे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट की मतलब वो बहुत अच्छा सीजन दे देगा एंड ही डू अ लॉट. ही वो आ गया है खेलने. ही इज अ फाइटर. व्हाट ही कुड हैव डन बेस्ट ही हैज डन बेस्ट. सो उस पे आई डोंट थिंक उसको अभी क्रिटिसाइज करने का टाइम अभी तो नहीं आया है.
एंड अभी उसकी जो इनिंग्स आ रही है, इफ ही वुड हैव बीन प्लेइंग, वो टच में होता, देन वी कुड हैव क्रिटिसाइज कि ये श्योर। 26 बॉल्स में 28 क्यों मार रहा है, एंड व्हाई इज ही प्लेइंग दैट काइंड ऑफ एन इनिंग्स। तो वो अभी आ जाएगा, अभी उस पे मैं इतना वरिड हूं नहीं, एंड आई थिंक वो कंसर्न नहीं है, बट इस टीम में कंसर्न तो बहुत वैसे और है। लैक ऑफ जो मतलब इंडियन बैटिंग है, इंडियन डेप्थ है, क्या लगता है सिड? मतलब क्या इन लोगों का स्काउट टीम इतनी अच्छी नहीं है? नंबर 3 नंबर 4 के बाद कोई खिलाड़ी नहीं है इनके पास। क्यों ऐसा करते हैं ये लोग हर साल? व्हाई डू दे ब्रिंग अप विद द सेम स्ट्रेटजी ऑफ डिपेंडिंग ऑन 2 to 3 प्लेयर्स? नहीं, अब देखिए, अगर अब मैं शुरू करूं तो अभी तो मैं ऑक्शन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ऑक्शन से ही, मतलब दे हैव डन सच ब्लंडर्स दिस टाइम। एक मतलब पिछले 2 साल, लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी किया था। लास्ट ईयर का एक ब्लंडर मुझे बहुत अच्छे से याद है, विच वॉज ट्रेडिंग अमन खान फॉर शार्दुल ठाकुर। एंड मतलब अमन, एंड ऑल्सो इंडियन स्काउट्स में ऐसे ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब मैं पूछता रह जाता हूँ, ये है कौन ये प्लेयर्स? ना इनकी रणजी में कहीं परफॉर्मेंस आती है, ना ऐसा है कि इन्होंने मतलब बहुत आईबॉल्स ग्रैब कर दी डोमेस्टिक में, ब्रेक थ्रू सीजन दे दिए, या ऐसा कुछ कर दिया ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई को देख लो, आप सीएसके को देख लो। सीएसके में समीर रिजवी है। समीर रिजवी हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन यूपी T20। ठीक है, एंड समीर रिजवी का मतलब, सीएसके तो चलो इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड देन मुंबई इंडियंस, दे प्रोड्यूस एवरी ईयर, दे प्रोड्यूस प्लेयर्स लाइक निहाल वडेरा, आकाश मधवाल, मतलब इतने सारे लोग हैं। एंड दिल्ली में यू हैव प्लेयर्स लाइक दीज रिकी भुई, लाइक रिकी भुई, व्हाई इज ही प्लेइंग? यू हैव पृथ्वी शॉ, यश धुल इन योर टीम, व्हाई यू आर प्लेइंग हिम? एंड आई जस्ट सॉ व्हेन ही गॉट आउट टू नांड्रे बर्गर, ऐसा लग रहा था उसकी अंतरात्मा कांप गई वो बॉल देख के, जो उसको बाउंसर पड़ी। मतलब इट इज सो डिसहार्टनिंग टू सी। यू ऑल्सो मेंशन कि 3-4 साल से प्रॉब्लम है। 2019 2021 में आई थिंक स्ट्रेंथ ही इंडियन प्लेयर्स थी दिल्ली कैपिटल्स की। अगर आप उस टाइम की टीम अगर आप देखो, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, यू हैव अक्षर पटेल, अश्विन, ईशांत शर्मा, आवेश खान, that was a quality, that was quality depth this team had. एंड अब आप क्या देख रहे हो? सुमित कुमार। अब आई एम वेरी सॉरी टू से हियर, बट सुमित कुमार की जो मैंने फर्स्ट इनिंग मैच जो था पंजाब से, आई सॉ हिज बॉलिंग देयर, मुझे देखकर ऐसा लग रहा था दे आर नॉट फिट फॉर आईपीएल। कहीं ना कहीं ये हम्म। सारी चीजों की वजह से ही वी सी टीम्स लाइक दिल्ली कैपिटल्स, वी सी टीम्स लाइक say Punjab Kings, and we were also seeing a team like say suppose Sunrisers Hyderabad struggling until the last year, but since Sunrisers Hyderabad ने कुछ आरसीबी भी है वैसे इसमें, स्कोर बट में चेंजेस किए, आरसीबी has always been that team, and probably like Gautam Gambhir said yesterday, right? They have never been a team जिसके साथ कोई भी rivalry हो, because they are a team who have won 0 trophies, and if we are talking about rivalries with team like एंड RCB, they behave like कि and we talk about if uh, RCB versus CSK, RCB versus Mumbai, or RCB versus KKR being rivalries, I absolutely second Mr. Gautam Gambhir there. Bullish, and I would completely say like ये सारे talks को they should just throw out of the Chinnaswamy Stadium, because they are not even a team to compete with the best of the teams. And कहीं ना कहीं आप देखोगे, right? They are a bit like RCB because they have had good players. For example, आवेश खान था उनके पास, श्रेयस अय्यर था उनके पास, they also had Phil Salt in the lineup, they also had Rahman Paul in the lineup. इनको सबको जाने दिया उन लोगों ने और एक नई टीम बनाने गए for some reason, I don't know what. So yes, नई टीम से अपन बात करते हैं दूसरी नई टीम के बारे में, that is for us, I would say one of the toughest teams going around, the KKR, that is Kolkata Knight Riders versus the RCB wala mukabla, the match that happened हम्म, yesterday, and it felt more like a contest between Virat Kohli and Gautam Gambhir instead of Fab du Plessis versus Shreyas Iyer, because Shreyas Iyer, I remember you and me both having an offline conversation. आपने सही पॉइंट किया कि श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं फील्ड में दिख ही नहीं रहे थे, एक एक्टिव प्लेयर नहीं लग रहे थे, सिर्फ फॉर नेम से ही वाज सम टेकिंग सम डिसीजंस. And I feel that the brain behind this entire team is two player, that is one is Brendan McCullum and the second being Mr. Gautam Gambhir. तो क्या लगता है सेड, कल का जो मैच था काफी वन साइडेड था यार, मतलब फ्रॉम द लाइक्स ऑफ अ मेगा मुकाबला दैट वी कॉल इट, आई डोंट थिंक इट वाज अ मेगा मुकाबला व्हाटसोएवर.
Virat Kohli's innings, for me, I am a Virat Kohli supporter, not an RCB supporter, but I am a Virat Kohli believer, and I felt, yes, I agree. While the pitch was slow, while the ball was gripping a bit, we saw Anderson bowling beautifully in the middle overs. But I don't think that was a 180 wala pitch. It was about 210, 215 wala pitch, jahan pe Virat Kohli should have accelerated at the right time. But however, as people have also pointed out, wickets were falling at the other end, which costed Virat Kohli to play that kind of innings. So just to sum it up, right? What do you think? First, the role of Virat Kohli is sheet anchor, what we call in Test and ODI. Sheet anchor player is required in T20 cricket first. Second, that terrible bowling यार, मतलब इससे अच्छे तो मेरे गली क्रिकेट के bowlers bowling करते हैं सही में, to be very honest. What's your take on both the points? तो सबसे पहले अगर मैं आरसीबी की बॉलिंग पे बात करूं तो आई थिंक वेरी ब्लंटली आई वुड से इट कि दे डिजर्व टू लूज लाइक दिस एंड ऑक्शन के बाद व्हेन दे वी आर सीइंग देयर टीम, इनकी भी थोड़ी दिल्ली जैसी प्रॉब्लम है। इन पे तो मैं रैंट नहीं करूंगा बिकॉज आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ आरसीबी और आई डोंट ये, बट इनकी भी यही प्रॉब्लम्स है आई थिंक, तभी ये टीम्स भी ट्रॉफी लेस है बिकॉज ऑफ दीज डिसीजंस दे मेक। अब they had released Chahal in the mega auction, who was their most successful bowler at Chinnaswamy. Correct. Then उसके बाद you released Vanindu Hasaranga last year. So अब ऐसे डिसीजन से टीम ले रही है, स्पिनर्स है ही नहीं इस टीम पे, और बॉलर्स भी आप जेरल्ड कोएट्जी जैसे पे आप इतना लगा सकते थे। आई हैव सेड दिस इन माय वीडियोस आल्सो कि आप जेरल्ड कोएट्जी जैसे प्लेयर्स पे you could have spent on maybe a Dilshan Madhushanka or somebody like these. And you are spending on Alzari Joseph. So they deserve to lose and their bowling, हम बहुत शुरू से बोलते आ रहे हैं कि इनकी बॉलिंग चिन्नस्वामी पे बहुत स्ट्रगल करेगी। 250 इनकी बैटिंग बना भी दे किसी दिन, ये चेस भी करवा दे, तो वही वाली बात है। Yeah, absolutely यार, मतलब I definitely feel so. And just touching upon the point that the sheet anchor role, क्या ये जरूरी है नहीं है? As a neutral T20 cricket fan, right? I don't think in the modern world, that the Gen Z of 2024, we require a sheet anchor player any which way. क्योंकि अगर मैच हारना है तो वो 10 रन से हारा है या 50 रन से हारा है, हारना तो हारना होता है. If Virat Kohli had accelerated there, got out, टीम शायद 180 ने 160 बनाती, वहां से भी टीम हारती ही, क्योंकि उस पिच पे 180 भी इनफ नहीं था. 160 हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं वो अगर वो शायद वो रिस्क लेते. आई वाज सीइंग हर थर्ड या फोर्थ बॉल पे ही वुड टेक दैट चांसेस ऑफ हिटिंग अ सिक्स. बट अगेन टिपिकल टेस्ट मैच और ओडीआई इनिंग जहां पे वो पांचवें छठवें बॉल पे एक सिंगल लेने को जाते हैं. एंड दैट इज वेरी वेरी, आई वुड से, सेल्फिश काइंड ऑफ अ नॉक, बिकॉज यू डोंट वांट सिंगल्स टू बी हैपनिंग एट फिफ्थ और सिक्स बॉल. मैन T20 क्रिकेट में देखा गया है अक्सर कि चौथे या पांचवें बॉल तक द बॉलर ऑल्सो आर टायर्ड. तो पांचवा छठवा बॉल आर यूजुअली द लूज डिलीवरीज वेयर द बैटर्स कैन कैपिटलाइज. और कहीं ना कहीं विराट कोहली वो नहीं कर पा रहा है. इवन व्हेन ही वाज ऑन 49, he took a single there. We have seen players hitting sixes, boundaries where when they are at 44, 45. Someone like an Abhishek Sharma who's yet to make a mark in international cricket. वो fastest 50 बना ही नहीं पाता यार, अगर वो 44 पे दो सिंगल या एक बाउंड्री मारने को जाता. उसने he went for a six, hence he got a 16 ball 50. And that is a fearlessness that we need in probably a stalwart like Virat Kohli, so that the rest of the team also follows the same. I feel this is not going to stop unless the management tells Virat Kohli that this is not your role, bro. You have to play fast. You don't have to be the sheet anchor, which I don't think they will ever realize. So yeah, moving on from हाँ जी। the Royal Challengers Bangalore and KKR2. सिद्धार्थ, मेरे को आपसे थोड़ा ओपिनियन चाहिए ऑन द मेगा मुकाबला दैट वाज द ब्लॉकबस्टर गेम, द 500 प्लस रन्स गेम. Like first of all, have you ever imagined like 5 years ago कि कभी किसी दिन में T20 क्रिकेट में 500 प्लस रन स्कोर होंगे by both the teams? Have you ever imagined? Just put me up that. ऐसे तो नहीं किया, बट आई थिंक ये 277 बनना तो कभी मैंने ऐसे इमेजिन करा नहीं था। मुझे लगता है एक अच्छा रिकॉर्ड था आरसीबी का 263 का, मुझे लगा उससे ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। बट आई थिंक T20 क्रिकेट जैसा इवॉल्व हो रहा है और जैसी चीजें हो रही है, अब तो कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, इट हैपेंड, इट्स गुड फॉर अस क्रिकेट फैंस। एंड मुझे लगता है ये शायद इट वाज नॉट probably
the Sunrisers Hyderabad, they showed a way that even 300 is possible in T20 cricket. If not for Bumrah, who bowled 4 overs for 33, आराम से ये 300 रन बन सकता था इस ग्राउंड पे. एंड प्रोबेबली इवन मुंबई इंडियंस कुड हैव चेस्ड इट आल्सो, गिवन द स्लो इनिंग्स ऑफ हार्दिक पांड्या जो 20 बॉल पे 24 रन खेला. अगर वो इनिंग्स नहीं होती तो शायद ये मैच चेस भी हो जाता. सो बोथ द थिंग्स कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ डायरेक्शन दिखाता है. प्रोबेबली व्हेन वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट इन 2028, we'll be talking about a game where 300 runs are being scored and chased probably. So I don't feel that even sky is the limit for the way T20 international is going currently. Two key takeaways from me, particularly from this match set. Pehla tha for me, the way Hardik Pandya used Bumrah was ridiculous. To be as Of like I would course. say as subtly as I can put, it was ridiculous. Even Henrik Larsson acknowledged it in the mid innings, where he said they were saving the best bowlers for the death overs, and that is where we capitalized in the initial few overs. And the second thing being, when Hardik Pandya in itself knew कि भाई मैं वो fast innings नहीं खेल सकता, why didn't he think of promoting someone like a Tim David or someone like a Romario Shepherd ahead of himself, and then took the finishing responsibility upon himself? What do you think कि ये जो crowd booing etc जो हो रहा है उसका pressure हार्दिक पांड्या पे आ रहा है, या क्या हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ? Because he is not the same player that we used to know Hardik Pandya. Hmm, एक तो मुझे लग रहा है कि he is doing some fake positivity things like he was seen very jovial and very relaxed after the loss. वो बहुत ज्यादा मेड अप लग रहा था. Correct. एंड फिर उसके बाद वो जब से आया है मुंबई में चीजें मेड अप ही लग रही हैं. रोहित को हक करना और Right. ये करना, मतलब ही इज ट्राइंग कि उसकी इमेज थोड़ी सही हो जाए. एंड प्लस अब मुझे कभी भी ये डिसीजन तो समझ नहीं आया कि वाई ही वेंट टू मुंबई अगेन. ही वेंट फॉर मनी ओनली. ये मुझे लगता है उसका बू होने का इफेक्ट तो थोड़ा उन पे पड़ रहा है. एंड प्लस आई थिंक टफ होने वाला है आगे उनके लिए, बिकॉज अभी रोहित शर्मा के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट है इस वक्त, बहुत ज्यादा सिंपथी है. इवन जब से वर्ल्ड कप में वो हारे हैं उसके बाद से रोहित शर्मा के अंदर काफी चेंज आ गया है. मतलब as a person and as a वो he, because टेस्ट क्रिकेट में he was very serious on the players that जिन्हें भूख है वो खेलेंगे. Correct. and हमें समझ आ जाता है. You have heard about it, you might have heard about it. Rightly put said. मतलब कहीं ना कहीं ये सारा चीजें चेंजेस हो रहा है. एंड this is where probably Mumbai Indians are also lacking a good leader now. But yeah, that's not our headache probably, I would say, and that Hmm. is the headache for. And either of Surya Kumar Yadav or Bumrah might have deserved the captaincy, but यही होता है I कि I अब think मतलब you have to deal with him, correct, and he needs to change his captaincy and because I don't think they actually he's not a bad captain. correct, but I don't think they will now Actually he's uh, undo the decision of removing Hardik Pandya, because वो yeah, करना yeah, they'll बहुत not बड़ा of हो course. जाएगा. And I feel they are far away from it, and a player like Hardik Pandya Hmm. won't even like that decision given उसका जो attitude रहा हाँ है, हाँ. that you rightly called out. नहीं, एंड प्लस जीटी में ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब. मुझे तो Correct. यही लग रहा था कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा सा हो गया जीटी में जाके. एंड देन ही बिकेम इंडियाज कैप्टन ऑल्सो बीच बीच में. तो वो मुझे अच्छा लग रहा था कि ये सब चीजें इतनी हो रही हैं, जीटी को वो एक नई पहचान दे रहा है एंड ऑल. बट अगेन ही वेंट टू दैट, एंड प्लस उसको यहाँ काफी डिफरेंटली चीजें करनी पड़ेंगी. बिकॉज बहुत जल्दी से मैं इस बात को कहूंगा कि रोहित शर्मा ग्रूम्ड प्लेयर्स लाइक आकाश मतवाल एंड निहाल वडेरा, and now Hardik is not even playing them. सही तो बात है. बहुत ही चेंज हो गया है. तो अब मुझे लगता है जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, हार्दिक को कुछ जिताने पड़ेंगे मैचेस, वरना वो बुरी होता रहेगा इस पूरे सीजन. Absolutely, absolutely, yaar. Very, very rightly put, Siddharth. There, that is where we have experts and cricket enthusiasts like Siddharth to have on our show to give our audience such flavor and such masala and such insights which we normally do not get to see. So yes, thanks Siddharth for joining our show. Hope you do well in your YouTube channel, that is Cricket Show with Sid. Please like, share and subscribe Siddharth channel and also Cotton Bull Stories without fail, क्योंकि मेरी नजर सब पे, I am seeing everyone 500 plus 600 plus views जरूर आ रहे हैं, but people are not subscribing to the channel, and that is very bad. For the amount of efforts we put, I would like us you all to support us
by sharing, liking, and commenting on our video. And please also subscribe to our channel. So that is it from our side, guys. Siddharth, thanks for coming to the show, sharing your thoughts. Much liked it, brother. We'll have this episode once again sometime soon. So that's it, my audience, Sure. from my show, that is Cotton Bull Stories with Kanan Nair. This is your host and your host signing off from Cotton Bull Stories. Thank you.